Hello students, today we will start our new chapter, that is some basic accounting terms. In this chapter, first term is transaction. What is transaction? Transaction means any financial events which brings change in financial position of a business organization. Means what is financial and what is non-financial you have already understand. Means ऐसा कोई इवेंट्स हो जो हमारे बिजनेस के पोजीशन को चेंज कर दे, वो फिनेंशियल हो मतलब पैसे संबंधित हो और हमारे बिजनेस के पोजीशन को चेंज कर रहा है. बिजनेस के पोजीशन मीन्स पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी. अगर चेंज कर रहा है देन इट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन. देन नेक्स्ट इज एसेट. एसेट्स आर द मटेरियल थिंग्स which creates benefit for organization in near future. Means ऐसा कोई मटेरियल थिंग्स जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्रिएट करेगा, फ्यूचर में बेनिफिट क्रिएट कर रहा है जिससे हमें लाभ होने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं. और जैसे हमारा एसेट हो गया लैंड, बिल्डिंग, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल एक्सेट्रा. देन क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट. Assets are classified in several parts. First part is fixed asset. These assets are required for long-term use in business and not means for resale. Means fixed asset are those assets which are required for long-term use and it is not mean that it is for resale. मतलब ऐसे as the name suggests, fixed asset are those assets which remain fixed throughout year to year and fixed asset is not going to change in near future. In fixed asset we acquire some asset not for resale. For example लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. देखो हम अभी पढ़े थे एसेट क्या होता है. एसेट वो होता है जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट दे और फिक्स एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो अपने बिजनेस पर्पज के लिए लेके आते हैं, उन्हें रीसेल के लिए नहीं लेके आते कि हमने मशीनरी खरीदा फिर उसे रीसेल किया. ये हमारा बिजनेस नहीं हो सकता. हम उस बिजनेस से कुछ प्रोडक्शन करते हैं और उस प्रोडक्शन से बेनिफिट अर्न करते हैं. दैट इज कॉल्ड फिक्स एसेट. फिक्स एसेट में एग्जांपल कौन हो जाएंगे, लैंड हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा, मशीनरी हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, फीचर हो जाएगा. देन आफ्टर करेंट एसेट. करेंट एसेट मीन्स these assets are also called circulating or fluctuating assets. This asset doesn't remain fixed in near future. This asset we acquire only for one year. After that year these assets remains goes on changing. For example of current asset is cash, bank balance, bill receivable, closing inventory, etc. Then fictitious asset. Fictitious assets which can't be convertible into cash known as fictitious asset. ऐसा कोई एसेट जिसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं. जैसे एग्जांपल में आ जाएगा, आप अगर मान लो आप प्रमोशन पे कुछ खर्चे कर रहे हो, प्रमोशन पे आप कुछ खर्चे कर रहे हो, आपने सचिन तेंदुलकर को कहा कि भैया मेरा प्रमोशन कर दो, मेरे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, हम आपको इतने पैसे देंगे. ये आपने तो इन्वेस्ट किया, उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है. दैट वाई वी कॉल इट एसेट. बट क्या हम उसे बेच के, क्या हम उसे सेल करके फिर से पैसे रिकवर कर सकते हैं, नेवर. मतलब ऐसा कोई एसेट जिसको आप सेल नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट. देन नेक्स्ट इज वेस्टिंग एसेट्स. वेस्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर एग्जॉस्टेड बाय रेगुलर एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल आउट फ्रॉम टोटल रिसोर्सेज. मतलब कि जैसे ऑयल वेल है, कोल माइंस हैं, ये ऐसे एसेट होते हैं कि आप अगर रेगुलर एक्सट्रैक्शन करोगे इसमें से तो ये एसेट क्या हो जाएंगे, एक न एक दिन जाके खत्म हो जाएंगे. दे आर कॉल्ड वेस्टिंग एसेट्स. एंड नेक्स्ट इज टेंजेबल और इंटेंजेबल एसेट. टेंजेबल एसेट आर दोज एसेट विच यू कैन सी, you can touch, that are called tangible asset. For example land, building, plant and machinery. And intangible asset are those asset which you can't see, you can't touch, but you can only feel the advantage of intangible asset. Okay, the example of tangible assets are land, building, plant and machinery. And example of intangible assets are goodwill, patent, copyright, licensing, franchising, etc.
Liability means whatever a business have to pay in near future, that is called liability. Debt due by a business to its proprietor and others are known as liability. And सिंपल सी बात है, अगर हम प्रोप्राइटर्स की बात करते हैं, बिजनेस इज अ सेपरेट थिंग एंड प्रोप्राइटर्स इज अ सेपरेट थिंग. If proprietor invest capital in business, then it is the internal liability of business is to pay the capital to the proprietors. And others means outsiders, outside the business. Suppose that creditors, bank loans, who give money in advance or give goods in advance to the business, then business is the obligation to pay money or goods to that person in time. Then liability is clear. Listen again. Liability means whatever a business have to pay in near future is called liability. Definition of liability. Fixed liability. This liability paid by a business after a long period of time. Fixed liability are those liability which a businessman have to pay after a long period of time, normally more than 1 year. Then current liability. Current liability is payable within the span of 1 year, means more than 1 year are the fixed liability, and with the span of 1 year are the current liability. Then next is capital. What do you mean by capital? Capital means fund or cash invested by proprietor in business are known as capital. Got it? Then next is fixed capital. Fixed capital means whatever the capital invested by a proprietor in a business, it is not going to change in near future. It will be fixed throughout the year and year to year, like land, building, plant, machinery. They are the fixed capital. Next is circulating capital. Circulating capital means suppose that which is for 1 year invested by the proprietor in business. For example, if you have purchased a vehicle is a fixed capital, and whatever the fuel consumed by a vehicle is a circulating capital. That is a circulating capital. What is the working capital? Working capital, mathematically we can say that working capital is equal to current asset minus current liability. Means excess of current asset over current liability are known as working capital. What is current liability? A liability for 1 year. And what is the current asset? Current asset means a capital which are like cash in hand, cash at bank, likely to be arise within a year. Next is expenses. It is cost incurred in producing and selling the goods and services. Whatever the cost incurred in producing or selling the goods and services are known as expenses. Next is income. Excess of revenue over expense are known as income. What is revenue? Revenue means sale. And what is expenses? Whatever you have incurred cash, मतलब जो कुछ भी खर्चे आपने किए हैं किसी गुड्स और सर्विस को मैन्युफैक्चर करने के लिए, दे आर द एक्सपेंसेस. एंड जो कुछ भी आपने अर्न किया है, जो कुछ भी आपने सेल करके पैसे अर्न किए हैं, दैट आर द रेवेन्यू. एंड डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू and expenses are known as income. Okay.